Good morning, all of you. I welcome you all to Ansarkari. So, in this video, we'll be analyzing all the important articles from different newspapers for 17th of April 2023. So, we'll be looking into topics like G7 it commits to quit the fossil fuels faster. We also had a look at this thing yesterday also. Then, apart from that, rise of China, decline of American influence. It's a new sort of regional alignment where here we're talking about West Asia, so Saudi Arabia and Iran ties. So this is again a repeat. And yeah, so let's start with the analysis. So UP government has formed a judicial commission to investigate the killings of Atiq and his brother. So that's there, and it is not that important for us. So when it comes to environmental impact assessment, we need to know the entire process. क्या process पूरा adopt किया जाता है? And here it is one of the examples कि सबरीमला greenfield airport है जो उसके लिए central government it is given the final approval. So obviously it is the Ministry of Civil Aviation. And the project, it has passed a significant technical milestone. So at present, the social impact assessment study for the project is in its final stage. So social impact assessment hoti hai, environmental impact assessment hoti hai before any project is like finalized and it like the work is started. So army, it may build the Bailey bridges in Kaziranga to protect the rhinos domain. So these bridges, they will essentially replace the wooden structures in the flood-prone, vulnerable pockets of the park. So हमें देखने को मिलता है कि during floods, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में भी फ्लड्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से we also lose rhinos. So for that, for their protection, Bailey bridges construct किए जाएंगे. So अभी wooden structures है, so that would be replaced with these Bailey bridges. So this it is going to be a permanent solution, and definitely this is also a UN World Heritage Site. And apart from this, हमें पता होना चाहिए कि which rivers they pass through this national park. And it is also a tiger reserve. So ये भी चीज माइंड में रखना important है. And we find the renowned one-horned rhinoceros here, so it is their domain. So 3 Bailey bridges within the park would be constructed. So these are going to be a permanent solution to a communication problem, specifically during the floods. So they are also expected to shorten the routes to the vulnerable pockets and facilitate better coordination among the forest guards manning the anti-poaching camps. So Kaziranga, it has a total of 223 anti-poaching camps, and many of them are inundated during the floods. So this is like to prevent all these things, a permanent solution. Coming to the editorial page here, so diplomacy with a change in terms of reference. So mediation is rarely a spontaneous act. More often than not, it is preceded by quiet efforts to seek a meeting point between the differing viewpoints of the individuals or organization. So that's there, and it figures in Article 33 of the United Nations Charter among the means of
pacific settlement of dispute, but in legal terms, it is different from the good offices and arbitration. So a good instance of this was recently witnessed on the global stage, and the question of motivation, it can be debated. But in a joint statement, we saw that by Iran, Saudi Arabia, and China, it was sitting at a table in shape of an isosceles triangle, and the three countries, they announced that an agreement has been reached between the Kingdom of Saudi Arabia and Islamic Republic of Iran covering a resumption of the diplomatic relations between them and reopening of their embassies and missions within a period not exceeding 2 months. So this is मतलब mediation की बात हो रही थी, तो China is the mediator in this case between Saudi Arabia and Iran, and this is complete repeat topic है. इसके बारे में हम डिटेल में पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि क्या मतलब चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हाउ जियो पॉलिटिक्स इज रीशेपिंग, इट इज गेटिंग रीऑर्डर्ड इन वेस्ट एशिया, चाइना का रोल इंक्रीज हो रहा है, यूएसए का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, एंड जो पहले यूएसए चाहता था सऊदी अरेबिया ने उस तरीके से एक्ट नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, हमने प्रॉपर डिटेल में वी हैव क्रिटिकली एनालाइज दिस थिंग. सो इसको पूरा हम रिपीट नहीं करेंगे. So China brokered agreement between Saudi Arabia and Iran. It reflects a new sort of regional alignment amidst America's declining influence. So ये हम बात कर चुके हैं कि अमेरिका का influence in Western Asia वो कम हो रहा है, and with time we are seeing कि China का increase हो रहा है. And इंडिया का स्टैंड की अगर हम बात करें तो इंडियाज रिएक्शन टू दिस डेवलपमेंट, इट हैज बीन रेस्ट्रेन्ड. And apart from the historical linkages, the region, it is in India's proximate neighborhood and within its security parameters also. So security के लिए भी इंडिया के लिए region important है, क्योंकि when it comes to crude oil imports, India is dependent upon specifically countries like Iraq and Saudi Arabia. So security in this region is very important from that perspective. And definitely we also have historical linkages. So it is the principal source of hydrocarbon imports for us and increasingly of investments also. So with time we are seeing कि India में investments भी इस region से increase हो रही हैं. So it is also an important destination for the manpower exports. So जो basically India में से जो Indian labor है which is working, so it is maximum, it is in these countries. So Indian diaspora, it is important. So the official policy, it has focused on bilateral relations and avoidance of involvement in the bilateral and the regional disputes. So given these priorities, India, it is consciously refrained from speculative ventures in alternative security architectures apart from supporting the cooperative security. So India ने obviously cooperative security and freedom of waterways and navigation को हमेशा support किया है, and we have not indulged into speculative aspects. So the region, it should not be viewed in competition with China without the latter's economic and military capacity, nor should India consider itself a surrogate for those who have been outplayed, at least for the moment, in power games for the transitory affections. So abhi ke liye we can't see this area with competition of China. तो ये सारी important चीजें हैं. So here we have everything political. Bilateral trade between US and India, it rises in the previous financial year and it was recorded at 7.65%. And when we talk about the numbers, so it stands at $128.5 billion. So on democratizing tiger conservation. So recently Tiger Census ka data, it was made public. And here you can see the pictures of an Indian tiger and its young cubs. It is there in the Ranthambore National Park in Rajasthan. So it is from 2018. So
we see कि Project Tiger 50 years complete कर लिए हैं, and it was able to hold on to the tiger populations in most of the geographical regions where they existed at its inception. So definitely tiger population, it has crossed 3,000 mark. However, 2023 preliminary report, for the first time we find that this hold is slipping away. But अगर हम gist की भी बात करें, जो important facts है पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड टाइगर रिजर्व्स इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कहाँ पे कौन से लोकेटेड है, कौन से स्टेट में मैक्सिमम है, कौन से स्टेट में मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन मिलती है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो विल नॉट रिपीट दैट, बट विल जस्ट क्विकली गो थ्रू द जिस्ट. So gist is saying कि much of the success of the wildlife conservation in India, it has been attributed to the Wildlife Protection Act 1972, no doubt, and it was enacted 50 years ago by the then Prime Minister Indira Gandhi to arrest the alarming decline of wildlife across the country. So wildlife conservation के लिए we had this act back in 1972, and 2018-19 tiger numbers, that was around 2,967 tigers. By mentioning only the figure of plus 1,400, and that was estimated in 2006, wildlife managers, they are able to celebrate the doubling of the tiger population. So आज हम इस position पे है कि the tiger population has doubled in India. However, if we look 50 years back, under like tiger conservation की बात करें under the Project Tiger, so we will see that while we have held on to the population, the numbers do not reflect a great success. Despite the political support also, we had funds and strong legal framework. So we can't call it to be a great success अगर हम last 50 years को देखें तो. So we need to have the conservation frameworks जो local communities को, citizens को, scientists को, NGOs को and businesses को मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करता है, बिकॉज ऑब्वियसली सबकी कोऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टाइगर कंजर्वेशन. एंड इसके अलावा हमने ये भी बात करी थी कि वेस्टर्न घाट्स में वी आर सीइंग कि टाइगर पॉपुलेशन इज ऑन अ डिक्लाइन. एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें, विल टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यूपी वाले एरिया में, यहाँ पे वी आर सीइंग इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में वी आर सीइंग कि द टाइगर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. So G7 ministers, they commit to work for carbon-free electricity by 2035. So on the final day of the conference in Sapporo, a proposal to have a deadline for phasing out the coal gets shot down, as the final text gives leeway for the investment in gas as a stopgap arrangement. Participants also agree to speed up the clean energy investments. So कुछ चीजें निकल के आई है from the conference, and climate and energy ministers and envoys from G7 countries on Sunday, they committed to work towards ensuring carbon-free electricity production by 2035, and also accelerating the phasing out of the coal. So coal के लिए कोई ऐसा exact target नहीं आया है, but carbon-free electricity के लिए it is by 2035. And obviously, we will be relying more upon renewable energy gradually to produce electricity. So that's there. And the participants, they also agreed to accelerating the solar and the wind energy investments to produce 1,000 gigawatt by 2030 from the solar power and 150 gigawatt of wind power from the offshore platforms. सो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी अभी हम कौन से सोर्स से जनरेट करें. इट इज हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पावर. सो ये हमें क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए. एंड लास्ट यूपी मीटिंग शर्म एल शेख में हुई थी, विच इज इन इजिप्ट. सो लोकेशन भी वी नीड टू रिमेंबर. एंड India and China, they are significantly dependent upon coal for the electricity, whereas several developed countries here like USA, Japan, Canada, Europe, they are reliant on gas reserves when it comes to producing the electricity. तो यहाँ पे हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं एंड क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं. उसमें ऑब्वियसली जो
burden है, we talk about कि developed world that is trying to shift upon the developing countries, क्योंकि developed countries जो है they have achieved that tag of developed world, तो उनको जितना हिस्ट्री में कार्बन एमिशंस करना था वो कर दिए हैं. जो डेवलपिंग कंट्रीज है अब उनका क्या होगा, तो मेन चैलेंज उनके लिए है. सो डेफिनेटली दे आल्सो नीड the finance when it comes to tackling these challenges at the climatic front. सो एनआई के बारे में हमें पता होना चाहिए. एनआई दैट इज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. क्या इसकी पावर्स हैं, हाउ इट इज डिफरेंट. एंड यहाँ पे यूएपी एक्ट की बात की गई है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. एंड दिस इज एन इंस्टेंस जहाँ पे कोझिकोड में ट्रेन आर्सन, सो इट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर एंड यूएपीए एक्ट को इन्वोक किया गया है. सो यूएपीए एक्ट कौन से सर्कमस्टांसेस में यूज की जाती है, ये सब चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. So Supreme Court, it is hearing the petitions regarding legalization of the same-sex marriages, and a study amongst the Indians it has found कि अगर legalization किया जाता है तो ये इस community के लिए, LGBTQI community के लिए एक positive impact होगा for their mental health. So this was as per a study जो results हमें मिल रहे हैं, and definitely this is like obviously quite possible कि उनकी जो mental health के लिए it would going to be a boost for them. So here it is all about Karnataka polls coming to the world page. So Nepal's Prime Minister Pushpa Kamal Dayal Prachanda, he is going to visit India next month. And उसके अलावा जो नेपाल की पॉलिटिक्स है, जो चेंजेस होते रहते हैं, वो हमारे लिए लाइक इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप एन आई ऑन, क्योंकि बीइंग इंडियाज नेबर, सो थोड़ा जो डेवलपमेंट्स चल रही है उनके बारे में पता होना इज जस्ट इम्पोर्टेंट. So as Berlin shuts its nuclear reactors, Finland ने open किया है यूरोप का largest nuclear reactor. So Finland's next generation nuclear reactor, it is the largest in Europe. It has gone into regular production after months of delays. And Germany ने अपना nuclear like it has ended its nuclear era. So Germany में like it has completely shut all its nuclear reactors. So that is the development. And this new nuclear reactor in Finland, it is now producing around 14% of the country's power, and it is expected to remain operational for at least next 60 years. तो पाकिस्तान में obviously inflation बहुत ज़्यादा है and hyperinflation के chances हैं. So they have increased their prices of petrol by ₹10 per liter, and obviously economic situation पता है, political instability है, skyrocketing inflation देखने को मिल रही है, it is being recorded over there. So steep currency devaluation हो रहा है, further it is burdening the citizens, and yeah, so obviously that is the situation. And Lula, who moots the joint talks with China, UAE on the Russia war. And Brazil's president said he discussed the joint mediation for Russia's war in Ukraine with China and UAE, accusing the US and Europe of prolonging this conflict. So अभी तो blame ही किया जा रहा है. So कल हमने देखा था कि सूडान में there were clashes between the paramilitary force and the military. So 61 people have died after the clashes. And apart from that, this region now becomes important for the examination perspective. So जो भी like geography है, it is very important क्योंकि geography में map based questions पूछे जाते हैं, तो you need to open your atlases and
You need to just memorize and just visualize कि कौन सी कंट्री किसको बॉर्डर कर रही है उन एरियाज में जो न्यूज में ज्यादा हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देखी जा रही है. सो दे आर इम्पोर्टेंट. कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कौन सी सी है, कौन सी स्ट्रेट्स हैं, कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, कौन सी रिवर्स किस सी में ड्रेन कर रही है. सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So Sri Lanka at 75, when it completes 75 years of independence, it is a failed state. This is coming from their former president, Kumar Tunga. So despite possessing enviable social indicators at the time of independence in 1948, Sri Lanka at 75 is a failed state. And 75 years, it's a long time for a nation to achieve considerable progress, even after 450 years of destruction by the colonial rulers. At independence, Sri Lanka, उस time पे it possessed some of the best socio-economic indicators. So जब Sri Lanka it became an independent country, उस time पे it had some of the best socio-economic indicators, and now 75 years down the line, it is a failed state as per their former president. And we know कि obviously economic situation पाकिस्तान में खराब है, श्रीलंका में खराब है, and बांग्लादेश की भी हम बात करें तो दे आर सीकिंग IMF एड. एंड रूट कॉज को समझने की कोशिश करें तो root cause of the Sri Lanka's failure is that while the country it functions as a modern emerging economy financially, but it is mired in the practices of a backward semi-feudal society आज के time में. So that is in the social and the cultural spheres. It is a semi-feudal society, but it economically it is trying to function as a modern emerging economy. And apart from this, she also had a self-critical reference to the country's famous ruling clans, including her own family, and all the main political parties invariably played the ethno-religious card in every election. So they obviously focused more upon winning the elections. So आज के time में this is the situation. And apart from that, जो China की debt policy है, that is also one of the major reasons जिसकी वजह से like Sri Lanka it is dependent upon tourism, so that declined COVID-19 के time पे. And then बाकी factors भी they were at play which led to the decline. So Telangana में we are seeing कि it is facing a persistent high inflation problem. So national average around 5.7% चल रही है. And यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के लिए इन्फ्लेशन फिगर्स दे रखे हैं. तेलंगाना में हाईएस्ट है 7.6%. बाकी स्टेट्स में भी तमिलनाडु में 6.7% है, यूपी में 6% है, केरला में इट इज 5.8, छत्तीसगढ़ में इट इज ओनली 1.9%. सो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि इतना ज्यादा वेरिएशन इन्फ्लेशन में क्यों देखने को मिल रहा है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. सो इन्फ्लेशन डिफरेंट स्टेट्स में क्या डिफरेंट होती है? डेफिनेटली इट इज डिफरेंट. अभी हमने देखा ही कि इट इज डिफरेंट. जो CPI रिकॉर्ड किया गया है, कुछ स्टेट्स यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जहाँ पे 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है. कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो टारगेट लेवल ऑफ 6% है उससे बिलो रिकॉर्ड की गई है, तो इट इज अराउंड 4%. छत्तीसगढ़ में लोएस्ट है 1.88%, बिहार में 5% है, असम में 4.5 है, दिल्ली में 3.4% है. सो वहां पे हमें लोअर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की है. सो इस वेरिएशन के पीछे कॉजेस क्या है? सो it is mainly due to the demand supply mismatch in both goods and services. So obviously हर state में ये situation different है, तो इसलिए different inflation record की जाती है. And सबसे ज्यादा it is, अगर हम बोले कि major cause क्या है, तो it is because of the food products. Food products में जो demand and supply है उसके mismatch की वजह से inflation is different. क्योंकि CPI में अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की वेटेज की बात करें तो इट इज 45%. सो कंजम्पशन पैटर्न इट इज अ फैक्टर, एंड डिफरेंट स्टेट्स में देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ कंजम्पशन पैटर्न, जिसकी वजह से वी सी different levels of inflation rate. So rice, it is the staple food for certain states. Therefore, any increase in the price of rice, it will fuel the inflation. So
वहां पे राइस की ज्यादा डिमांड रहती है, तो अगर राइस के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वहां पे इन्फ्लेशन हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। एंड अगर वेजिटेबल्स लोकली दे वुड बी शॉर्ट, तो प्राइस इंक्रीज होगा वहां पे। फ्यूल प्राइसेस ऑल्सो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। एंड क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो टैक्स है ऑन फ्यूल प्राइसेस दैट इज हाई, सो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी वहाँ पे हाई रहती है। एंड इसकी वजह से ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस क्यों हमें इन्फ्लेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। सो तेलंगाना में अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें हमें इस स्टेट में सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है, तो उसमें क्या रीजंस है। सो तेलंगाना इट कंसिस्टेंटली टॉप्स द चार्ट बिकॉज जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अनलाइक तमिलनाडु या केरला, वो इतना स्ट्रांग नहीं है इन तेलंगाना। एंड इट सप्लाइज फ्यूअर इसेंशियल आइटम्स थ्रू पीडीएस। सो पीडीएस इतना रोबस्ट, इतना स्ट्रेंथेंड इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है इन तेलंगाना। सो उसकी वजह से पीपल दे हैव टू बाय फ्रॉम द ओपन मार्केट हायर प्राइसेस पे। एंड स्टेट्स जो फ्यूल टैक्सेस हैं वो भी हाई हैं, सो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। एंड इसकी वजह से हायर रेंटल्स आर देयर। सो तेलंगाना इस सिचुएशन को कैसे ईज कर सकता है, कैसे इन्फ्लेशन को कम कर सकता है। जैसे कि हमने बोला कि पीडीएस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली सबसे पहला काम उस पर ही होना चाहिए, ताकि लोग बाहर मार्केट से एक्सपेंसिव प्राइसेस पे फूड आइटम्स ना खरीदे। एंड ऑल्सो लाइक मतलब सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है, एंड उसकी वजह से प्राइसेस वुड कम डाउन। And it should like remove all the market obstacles that are typically causing the prices to increase. And private sector can also play an important role when it comes to increasing the supply of the food products. And apart from that, it can like look into factors like black marketing. So that's there when it comes to inflation। and एक छोटी सी चीज सी जो हमें पता होनी चाहिए, reasons पता होने चाहिए, and that's more than enough। Now we'll be taking up financial express. So government it is planning to prepay off budget bonds. So outstanding liabilities they are around rupees 1.7 trillion. So investors they're not keen to exit the bonds with the high interest rate. So obviously जिन bonds में आपको ज्यादा interest rate मिल रहा है तो investors उनको क्यों बेचेंगे? They will wait and obviously उनको वो interest rate कमाना है with time। So they're not willing to sell them। and payback time, so rupees 6.7 trillion is the total off budget borrowings of the central government for different government schemes। So this is for the period financial year 2017 से financial year 2021 तक का जो टोटल गवर्नमेंट की ऑफ बजट बोरोविंग्स रही है। एंड उसमें से रुपीज 5 ट्रिलियन ऑलरेडी दे हैव बीन पेड बैक। एंड कितना बचा? ओनली 1.7 ट्रिलियन रुपीज इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि उसको भी टाइम से पहले पे कर दिया जाए। एंड मेजर आउटस्टैंडिंग ऑफ बजट लाइबिलिटीज ऑफ द सेंटर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, रूरल इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पावर सेक्टर स्कीम्स के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन रूरल। सो यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बजट लाइबिलिटीज अभी हैं। सो शेल कंपनीज के लिए और स्ट्रिक्ट रूल्स आने वाले हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स it is understood to be in discussions over various proposals such as phone app to geotag the pictures of the office of the company, as well as setting limits on the numbers of company that can be incorporated by a single person। So ये कुछ changes are being discussed when it comes to having these stricter rules against the shell companies कि एक सिंगल पर्सन पे एक लिमिट लगाई जाएगी कि एक इंसान इतनी पर्टिकुलर कंपनीज ही ओपन कर सकता है। एंड जो ऑफिसेज रहेंगे कंपनीज की उनकी पिक्चर्स को जियो टैग किया जाएगा। क्योंकि शेल कंपनीज क्या होती है, दे दे मतलब एक छोटा सा ऑफिस ओपन अप हो जाता है बट एक्चुअली दे डू नॉट
लाइक फंक्शन। तो राउंड ट्रिपिंग के लिए, ब्लैक मनी के लिए, टैक्स इवेजन के लिए शेल कंपनीज का मिसयूज किया जाता है। बेसिकली ऑब्वियसली शेल कंपनीज लीगली नहीं है, मिसयूज क्या उनका लाइक यूज किया जाता है, आई शुड से। सो for tackling all these challenges, Ministry of Corporate Affairs, it is in discussions regarding stricter rules against the shell companies, and जो ease of doing business government provide कर रही है उसका misuse नहीं किया जाना चाहिए by the people, and this is obviously especially so for the incorporation of these shell companies. So this has come after the Ministry of Corporate Affairs, it had initiated action against Chinese shell companies जो operate कर रही थी इंडिया में, and Serious Fraud Investigation Office, it had launched investigations against 33 entities. So while there is no official definition, कोई ऐसी official definition नहीं है कि shell companies क्या होती हैं, but these are firms जहाँ they are largely associated with the financial irregularities and money laundering. So इन चीजों के लिए they are basically set up. So SBI, it moves Apex code and seeks clarity on the fraud account. So sharing the forensic report, it may lead to evidence destruction. So plea points, clarity on like 27 March order on the fraud classification, non-disclosure of entire forensic report, and borrowers allowing banks to decide time frame for adjudication on classifying the fraud accounts. So ये कुछ issues हैं, and so जो top firms है, they see and they expect that there is going to be around 20 to 25% increase in their sales growth आने वाले summers में. So rising mercury, it leads to sharp spike in demand. So obviously seasonal demand increase हो जाएगी, ice creams की demand increase हो जाएगी, जो soft drinks हैं they उनकी sales increase हो जाएगी, and obviously जो air conditioners हैं उनकी demand भी and sale increase हो जाएगी. So that's going to be there. And so in a first, states, they have released over 100% of the subsidies to discoms. So power sector subsidy 2021-22 की बात करें तो around 1.78 trillion rupees it has been booked by the discoms, and they have received जो amount received किया गया by discoms from states was 1.83 trillion rupees. So around 12,000 का जो amount जो difference बच गया, that is these are the arrears जो states ने clear किए हैं. So जो non payment था या delay थे in release of the subsidies to the discom companies, that is seen to be the starting point of the vicious cycle of payment defaults in the energy value chain. So obviously because of delay in subsidies जो release की जाती हैं उसकी वजह से default भी फिर होने लगते हैं, तो timely payment of subsidies must be ensured. So economy, it is not falling behind. The Asian Development Bank and the World Bank, they have only modestly reduced the growth forecast for this year for India. And even after this reduction, India, it will be the fastest growing major economy in the world. So हमारी जो growth forecast है उसको कम करने के बाद भी India would still hold on to this position of being the fastest growing major economy in the world. And obviously this is like हम इंडियन इकोनॉमी की रेजिलेंस की बात करते हैं, लाइक फॉरेन फैक्टर्स से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कुछ माइनर डिस्ट्रप्शन हम बोल सकते हैं या माइनर इम्पैक्ट होता है ऑन आवर ग्रोथ, बट इतना ज्यादा वी आर नॉट रिलायंट अपॉन द फॉरेन सेक्टर, या इतना ज्यादा हम लिंक्ड नहीं है कि अगर कोई ऐसा ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट होता है, लाइक अभी रिसेंटली 2 बैंक्स फेल हुए थे यूएसए में, तो इंडिया के ऊपर अगेन इतना इम्पैक्ट नहीं देखा गया. तो जो हमारा रेजिलेंस है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है. सो दैट इज द केस, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर जो मेंबर है संजीव सान्याल, ही इज सेइंग दिस. So government, it is going to merge two dairy schemes, and that will be like helping the private sector. So infrastructure पे काम किया जाएगा. So animal husbandry infrastructure development fund and dairy processing and infrastructure development fund, इन दोनों को merge किया जाएगा. So animal husbandry infrastructure के लिए and dairy processing infrastructure के लिए इन दोनों को merge किया जा रहा है. And so that is the thing. So through the merger, the government, it is aiming to encourage the private sector in creating dairy and meat processing infrastructure, and only 20 to 25% of the milk produced in the country that is processed. So aim ये है कि इसको हम increase करें up till 40% in the next couple of years. So India में जितना total milk produce किया जाता है सिर्फ 20 से 25% ही process होता है. So target ये है कि इसको हम 40% तक लेके जाएं. So beating the food inflation, again supply side की वजह से food inflation हमें देखने को मिल रही है. तो ensuring adequate amount of supply would be helping us in bringing down the food inflation, and reducing import duties for the skimmed milk powder, wheat. It could help keep the food inflation below 5% level. And also जो wheat exports हैं उसके ऊपर भी right now the ban continues. So अभी आप wheat को export नहीं कर सकते हो. So again this is a step ताकि like जो domestic availability है, domestic supply of wheat है, that is maintained at adequate amount, and हमें like domestically पहले inflation को tackle कर ले, उसके बाद we'll be focusing upon the export area. So developing agricultural commodity futures market, that can help, but unfortunately futures trading, it is suspended for several agricultural commodities. So India needs to build trust in agricultural futures trading urgently. So futures and like options होता है, it is a like derivative instrument जो capital market में use किए जाते हैं. So वहाँ पे हम like at that front we can like do some developments. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा हमारे पास लाइक पब्लिक किया गया था, उसमें वी सॉ की इन्फ्लेशन हमने 6% के लेवल से नीचे रिकॉर्ड की है. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ ब्रीदर फॉर अस वी कैन से. एंड आने वाले टाइम में वी आर ऑल्सो हैविंग एक्सपेक्टेशंस कि इस साल एल नीनो हो सकता है, तो उसकी वजह से अगेन जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं कि it might lead to increase in inflation, specifically food inflation की अगर हम बात करें तो. So that's the case. And inflation के बारे में हमने बहुत like ज़्यादा discuss किया है in different context. So that remains important from the examination perspective. Coming to the Indian Express, so here we'll see कि जो हमने चीजें repeat नहीं करेंगे, जो हमने miss किया है सिर्फ will be taking up that. So everything it is political, हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी important नहीं है. So editorial page पे देखते हैं we get any like nice article for us. So Plato has said कि जब society में crime होता है तो there is no justice. So when there is crime in society, there is no justice. So अभी recent जो murders हुए हैं of Atiq Ahmed and his brother, in this context, it is relevant. And murder for a murder. So when citizens, they kill the dons with cops watching and say
कि it will bring them benefits that has the encounter raj. So like मतलब has the encounter raj come here or not is a question. कि जब obviously citizens they are saying कि ऐसे मर्डर से citizens को society को benefit है and they are supporting this act of killing the dons, so it raises the question कि क्या like encounter raj is back. So हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए छोटा सा कि like do you support this method or not. So अभी like आम आदमी पार्टी इट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, सो उसके लिए हमने डिस्कस की थी क्या क्राइटेरियाज हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को फुलफिल करने पड़ते हैं बिफोर इट इज गिवन दिस टैग ऑफ अ नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी. सो दैट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, वो हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड सो जो बेसिकली क्राइटेरियाज हैं दे आर वेल डिफाइंड एंड ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो डिक्लेयर करता है नेशनल पार्टीज and it is not a subjective interpretation of their influence. So obviously political parties के influence के basis पे उनको ये tag नहीं दिया जाते हैं. And हमने ये भी discuss किया था कि क्या अगर एक political party है उसके पास पहले से national party का status है तो क्या उसको वापस लिया जा सकता है या नहीं. Obviously वापस लिया जा सकता है, ये परपेचुइटी के लिए नहीं होता है कि एक बार आपको टैग मिल गया तो उसके बाद उसको आप वो पार्टी हमेशा नेशनल पार्टी ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है. अगर आप क्राइटेरिया आगे आने वाले टाइम में फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपसे वो टैग वापस लिया जा सकता है, एंड अभी कुछ पार्टी से वो लिया भी गया है. And the El Nino shadow. So a clearer picture will emerge by end May, but the government it could prepare for a possible subnormal monsoon. So subnormal monsoon अभी के लिए हम expect कर सकते हैं. And let's see कि क्या होता आने वाले टाइम में. लिविंग विद एल नीनो अगेन, यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन की बात की जा रही है एंड we don't have to resort to knee jerk methods. सडन ऐसा कोई knee jerk methods को फॉलो करने की अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द फूड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली. एंड आने वाले टाइम में अभी जैसे बोला जा रहा है कि फॉर सेफ्टी मेजर हम हमारी ट्रेड पॉलिसी को वाइजली यूज कर सकते हैं. इसमें मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है उनको कम कर सकते हैं ताकि थोड़ा इम्पोर्ट हम ज्यादा कर सके. अगेन मिल्क के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो मिल्क में बेसिकली जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से दिस थिंग इज इन न्यूज कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है एंड स्टिल इंडिया में वी आर सीइंग द प्रॉब्लम. So the current price inflation in milk, it is mainly due to shortage of fat. So it has led dairies to hike the full cream milk prices or to cut the fat content through rebranding of the existing products. So also milk, it does not attract GST, कोई GST applicable नहीं होता है, while जो skim milk powder होता है उस पे GST applicable होता है and an anomalous situation for which consumer ultimately pays. So यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस दे रखे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क फैट की बात कर रही है. तो यहाँ पे जो रीजन दिया जा रहा है ऑफ इंक्रीज इन द मिल्क प्राइसेस दैट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फैट. सो वहां पे थोड़े हमें डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं एंड so it's all about fat. The current price inflation in milk, it has mainly to do with the shortage of fat. It has led the dairies to increase. जो full cream milk है उनके prices increase हुए हैं and there have like reports हैं कि जहाँ पे branded ghee and reports of branded ghee and butter disappearing from the store shelves. So branded ghee and butter shortages हो रहे हैं. So यहाँ पे इसी की जो president है of the Indian Dairy Association, he links this partly to the falling contribution of buffaloes to the national milk production. So milk production भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है. Share of buffaloes, their milk, it has an average 7% fat है and 9% SNF content है. तो this is against 3.5% and 8.5% जो हमें cow से मिलता है. So total output was about 46.4% 2021-22 में and 2000 and 2001 में it was around 56.9%. So we can see कि clearly it has declined
एंड डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कम हो रहा है, तो नेचुरली इन्फ्लेशन होगा. बट सप्लाई इट इज कमिंग मोर फ्रॉम क्रॉस ब्रीड्स दैट गिव लो फैट मिल्क. सो क्रॉस ब्रीड से ज्यादा प्रोडक्शन अभी हमें मिल रहा है, तो वहां पे वी गेट लो फैट मिल्क. सो इसलिए जो मतलब फुल क्रीम मिल्क है एंड जो घी बटर है, उनके प्राइसेस इज ऑन द राइज. So export induced inflation है. However, more immediate reason for the rising fat prices is exports. एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं, उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए डोमेस्टिकली सप्लाई कम हो गया है, क्योंकि डोमेस्टिकली डिमांड भी इंक्रीज हुई है. सो दैट इज मतलब अगेन डिमांड सप्लाई मिसमैच इज द मेन फैक्टर. सो इंपोर्ट करने के अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास? So here, if we have a look, so October to March, it is normally the flush season in the milk, जहाँ पे जो supply है that exceeds the demand. So October to March का time period होता है जहाँ पे supply ज़्यादा होता है demand से, but dairies they convert their surplus that they procure into skimmed milk powder and butter fat. जहाँ पे जिनके पास surplus होता है obviously फिर उनको skimmed milk powder में convert कर देते हैं, butter fat में convert कर देते हैं. So this is done by separating the cream and removing water in the skimmed milk through evaporation and spray drying. So अभी we are seeing a lean summer monsoon months, जहाँ पे animals they produce less amid rising demand for curd, lassi and ice cream. So this is between April to September. So such processing into solids and reconstitution by adding water happens in no other farm produce. Like आटा फ्लोर में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप. sausages once they are made आप उनको फिर मतलब wheat में you can't convert them back. So 2022-23 में जो flush season था, it was a rare season जहाँ पे milk procurement fall हुआ, leaving the dairies with hardly any surplus for converting into fat and powder. So इस साल surplus नहीं हो पाया, उसकी वजह से we are seeing inflation. So जो milk solids पे GST applicable किया जाता है, उसको अभी for like temporary time period के लिए we can remove that. Alternatively, GST on milk fats that can be reduced to 5%. So instead of increasing the imports, ये कुछ alternatives हैं कि जो GST है उसको या तो कम कर दो या completely remove कर दो for a temporary time period. So Uttimariyur inscription, it is in news because it was mentioned by the Prime Minister. So it is like in this picture, you can see a 10th century temple inscription in Tamil Nadu. It is detailing the functioning of the village assembly. So local body की कैसे like democratic elements की अगर हम बात करें, तो this inscription is talking about that, and it was mentioned by the Prime Minister as I told you. So the inscription is there in Tamil Nadu. So अगर हम डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स की बात करें, हिस्ट्री से रेलेवेंस बात करें, सो उत्तमरियूर इंस्क्रिप्शन इज द बेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन साइट. सो इंडिया डेफिनेटली इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है. सो देयर आर न्यूमरस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस टू दिस एंड इंपॉर्टेंट रेफरेंस इज इन तमिलनाडु. सो टाउन एंड अगर इंस्क्रिप्शंस की हम बात करें, सो उत्तरमेरूर इट इज ऑल्सो रिटन एज Uthira Merur and Uttara Merur. So different spellings here. It is a town in Kanchipuram districts, which is about 90 kilometers southwest of Chennai. So originally it was established, this town was established in 750 AD as a village of Brahmins. It was given to them as a royal grant during the reign of the Pallava Nandi Varman II. So Pallavas ruled here, and today Uttamariyur, it is best known for its historic temples which have been built during the reign of the Pallavas and the Cholas. So 10th century से हमें बहुत सारी inscriptions मिलती है from these towns. So these are definitely बहुत important sources हैं हमारे लिए to study the politics and political administration in Tamil Nadu in early medieval period. So famous inscription referred to by the Prime Minister is from the period of the Parantakka, the one Chola. So he reigned from 907 to 955 AD.
and it is on the walls of the Vaikunda Perumal temple, which was built by the Nandi Varman II, and it is dedicated to Lord Vishnu. So this is the temple जो आप picture में देख सकते हो, the Vaikunda Perumal temple, and it was built by Nandi Varman II, dedicated to Lord Shiv, and obviously he was a Pallava king, Pallava ruler. So that's there. And ग्राम सभा की यहाँ बात की गई है, जो मतलब how it functioned, that has been mentioned in this inscription, and detailed like description है of the system of village self-governance and the functioning of the local sabha, the village assembly. So the sabha, it had specialized committees with specific functions, and the inscription disqualification की भी बात करता है. So it says कि there will be 30 wards. Everyone living in these 30 wards would assemble and select one representative for the village assembly. So proper mentioned here. So सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके पीछे का अगर रीजन समझे तो the roots they go back to the conflict of April 2019, जब सूडान का long serving authoritarian president Omar al-Bashir was overthrown by the military generals following a countrywide uprising against him. So he was overthrown by the military generals, but the civilian protests for the democratic elections and a civilian government, they continued. So 4 months later, Sovereignty Council, a power-sharing body of the military officers and civilians, that was constituted to lead Sudan to elections at the end of 2023. So Abdullah Hamdok was appointed the prime minister for the transitional period, and he took office in 2019. But the military, it overthrew the Hamdok's government again 2021 May, and Burhan became the de facto leader of Sudan. So Dagalo is the vice president of the ruling council, and Burhan's partner in the coup became the second in command. So Burhan announced that military would hold power until the elections were held in July 2023. So July में elections होने वाले हैं. Let's see होंगे कि नहीं होंगे. But अभी it is the military in powers in Sudan. So soon after the takeover, relations जो थे military and RSF, which was formed in 2013. It has been accused of human rights abuse and including the massacre of more than 120 protesters. And Burhan and Dagalo, they disagreed over how the 10,000 strong RSF should be integrated into the army. So which authority should oversee that process. So basically military power mein hai, to that is the reason of clashes in Sudan. So collecting the voice samples to aid the investigation. So इसकी legality को हम समझेंगे. So voice samples कैसे लिए जाते हैं? It is collected under the controlled circumstances following specific procedures. So voice sample generally it is taken in an echo-proof room for controlled noise-free environment, and a voice recorder it is used. And subject it is asked to say a small part of the original statement that is already part of the evidence, and both vowels and consonants in the spoken sample वो भी analyze किए जाते हैं. So क्या ये लीगल है टू कलेक्ट द वॉइस सैंपल्स ऑफ अ सस्पेक्ट और अक्यूज्ड? सो इंडिया का जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है दैट डू नॉट कंटेन अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर टेस्टिंग वॉइस सैंपल्स बिकॉज इट इज अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल है. सो इसलिए दिस इज नॉट कि जो हमारे लॉ है दे स्पीक अबाउट इट. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सीमेन या हेयर सैंपल्स फॉर डीएनए एनालिसिस और टेकिंग जनरल बॉडी मेजरमेंट्स, which is a routine and it is carried out under the specific provisions of the law. So to collect a voice sample, however, the police have to move court or to seek the consent of the accused. So आपको पहले permission लेनी पड़ेगी if you have to collect the voice samples, and section 53 है CRPC का, it allows examination of accused by medical practitioner at the request of the police officer. So Section 53 का पूरा डिटेल दिया गया है कि when there are reasonable grounds for believing that an examination of person will afford evidences as to the commission of an offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of police officer to make such an
examination and as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence. So जो यहाँ word examination है, it includes the examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offenses, sputum and sweat, hair samples, fingernail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling. So यहाँ पे voice samples हम नहीं देख रहे कि voice samples mentioned है. So it is also mentioning such other tests. So usme we can include the collection of voice samples also. So 2013 case mein Supreme Court considered whether compelling an accused to give his voice sample is the course of an investigation that would be violative of the fundamental right against self-incrimination or the right to privacy. So ये Supreme Court की judgment already है हमारे पास 2013 में. This is what Supreme Court had said कि अगर आप forcefully you're trying to get the voice samples, you're trying to record the voice sample, तो वो like जो person है उसकी fundamental right against self-incrimination and right to privacy दोनों को violate करेगा. So while delivering a split verdict in this case, Supreme Court ने acknowledge किया था that there is no specific law for the collection of voice samples in India. So the case was subsequently heard by a 3-judge bench because this was the split verdict. So subsequent जो 3-judge bench थी, it ruled कि the fundamental rights of the accused will not be violated by collecting a voice sample for investigation. So final verdict यही था कि अगर आप voice sample collect कर रहे हो तो उससे accused की fundamental right violate नहीं होगी because voice sample आपको investigation के लिए चाहिएगा. So the court held that the right to privacy cannot be construed as absolute and must bow to compelling the public interest. So यहाँ पे आ गई reasonable restriction की बात to the right to privacy. So that's an exception कि अगर आपको like public interest में it becomes important कि accused को voice samples they are very important for the investigation, so that would not be a violation of your right to privacy. So right to privacy absolute नहीं है. The only fundamental right that is absolute is under Article 17 right to untouchability. And जितनी भी बाकी fundamental rights हैं उन सब पे कुछ ना कुछ reasonable restrictions हैं. So this is what Supreme Court has clearly said. So कुछ यहाँ पे recent cases mention किए गए हैं जहाँ पे voice samples collect किए गए हैं. So fueled up diesel aviation turbine fuel exports to Europe, they touch multi-year high in March. So basically indirectly जो रशिया का ऑयल था वो इंडिया के थ्रू यूरोप को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बट अल्टीमेटली जा तो रशियन क्रूड ऑयल ही रहा है. सो एक्सपोर्ट्स टू यूरोप दे हैव मोर देन डबल्ड कंपेयर्ड विद फेब्रुअरी. सो रीजन आई हैव टोल्ड यू कि सिंस रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं एंड रशियन ऑयल पे भी प्राइस कैप इम्पोज किए गए हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस वॉर यूरोप रशिया से बाय नहीं कर रहा है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू यूरोप ओनली फ्रॉम रशिया वाया इंडिया. So USA emerges as India's biggest trading partner. And this is on account of increasing economic ties as per the government data. So trade with US, 7.65% is the increase in bilateral trade between India and US. 2.8% is the exports to the US, they have rose. And 16% is the imports growth. So trade with China, agar hum dekhe, so 1.5% is India's two-way commerce with China, it has declined. 28% is the exports to China, they have dipped, and 4% is the imports में increase हुई है. 28% से exports कम हुए हैं to China. Imports increase हुए हैं from China to India. And
The trend of increasing bilateral trade with the US will continue in the coming years, and China was India's top trading partner till 2017-18 तक China था इंडिया का top trading partner. Right now it is USA. So that's all for today. Thank you so much for joining us in today's analysis. And there's also a PDF link in the description box that has been provided. So do subscribe to our channel and hit the like button for this video if you're finding the analysis really helpful.